सो आई एम डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम द बिगिनिंग. फॉर्मूले आपको पता है, यू नो हाउ टू प्रोसीड. जो जो आपसे लगता है आप आसानी से कर लोगे, आप कर डालो. एंड देयर इज दिस थिंग कि वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर वेरी नाइसली. बस आप सिस्टमैटिकली इसको करो. तो फर्स्ट, अभी ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले कर रहा हूँ, फिर स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड देन आईएससी. So you get a wide range. Before we move to substitution method, you have any doubts, you ask. और कहीं आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो आप पूछो, क्लियर करते जाओ. और बस फिर इसको रेफर करके आप आज का आज कर लो, तो मैं कल दूसरा वाला कर लूंगा. एवरी डे 1 hour विल बी इनफ. यू कैन सी हाउ योर इंटीग्रेशन गेट्स लाइक बूस्ट, और कैसे आप अच्छे से इसको ये कर सकते हो. तो इंटीग्रेशन हमने रूल्स लिखे हुए हैं, हमको फॉर्मूले पता है इंटीग्रेशन के. Now we'll just start. I'll do some questions random before we start with the NCERT. तो एक अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec squared x minus 4 over x plus 1 over x root x minus 7 dx. हर एक चीज पे आप ध्यान से ये करो. फ्रेम में है ना? हाँ. तो अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रल साइन जो है ये इंडिविजुअली हर एक के पास जाएगा. सो I इज इक्वल टू दिस. नेक्स्ट स्टेप, सी माइनस प्लस. नाउ हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, x and this I'll write as x raised to half minus 7 dx. नेक्स्ट स्टेप, जो जो कांस्टेंट्स हैं इनको बाहर निकाल देंगे. 3 टाइम्स इंटीग्रेशन sec squared x dx minus 4 times 1 upon x dx प्लस. अब ये क्या हो जाएगा, x into x raised to half, that is x raised to 1 into x raised to half. You know exponents, a raised to m multiplied by a raised to n is a raised to m plus n. तो x raised to 3 by 2. 1 plus half is 3 by 2. लेकिन ये जो है आपके डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको न्यूमरेटर में लेकर जाओगे. सो इट विल बिकम x raised to minus 3 by 2 dx. तो dx हर जगह लिखना जरूरी है. लास्ट वाले में आपने 7 को यहां निकाल दिया. व्हाट इज लेफ्ट इज 1 dx. अब sec squared x का इंटीग्रेशन इज tan x. दिस इज 4 log of mod of x plus x raised to minus 3 by 2 plus 1 over minus 3 by 2 plus 1 minus 7x, because 1 का plus 1 का इंटीग्रेशन ये है. अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सो माइनस 3 by 2 plus 1 will give us minus half. आप चाहो तो इसको ऊपर लेकर जाओ, आपको नहीं, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो. इसको -2 ओवर x रेज टू हाफ या रूट x भी लिख सकते हो. आप ऐसे भी छोड़ोगे फिलहाल तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये फर्स्ट था, ऐसे ही सॉल्व करना है. अब ये टाइप का क्वेश्चन देखो, दीज आर स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन, बट क्या इंटीग्रेशन के लिए प्रैक्टिस के लिए स्टेट बोर्ड और आईएससी के क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो अच्छा है. इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x रूट x dx. ये है. हाँ, पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. x रूट x को x इंटू एक्स रेज टू हाफ. राइट नाउ
3x cube over x raised to 3 by 2 dx minus 2 x 2x over x raised to 3 by 2 dx plus 5 over x raised to 3 by 2 dx. This was the first step. We separated. Next step में 3 को कॉमन निकाल दो. 3 by law of indices. Here in the first one, x raised to 3 over x raised to 3 by 2, right? This is a raised to m over a raised to n, makes it a raised to m minus n. So, okay, so same thing here. Now when we simplify, right, इंटीग्रेबल फॉर्म में है. अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो. ठीक है. सो एंड लास्ट में ठीक है. एंड दिस विल कम डाउन. तो एक्सपोनेंट्स का अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. नाउ the first exercise of NCERT, we'll do it very quickly before I go to trigonometric questions. So you tell me. फर्स्ट का जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस है ना, दे आर बाय इंस्पेक्शन मेथड. मतलब जैसे साइन 2x है, उन्होंने बोला इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप वो कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व करोगे. जैसे कि देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बोल रहे हैं, तो पहले आप ये बताओ कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 2x minus sin 2x and चेन रूल 2. ठीक है. तो अगर आपको sin 2x का इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर यू विल नीड अ नेगेटिव साइन एंड डिवाइड बाय 2. सो दैट मीन्स दिस इज, हाँ, आई कैन ऑल्सो से माइनस हाफ डेरिवेटिव ऑफ cos 2x is equal to sin 2x. ठीक है. दैट मीन्स अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे अभी, सो यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2 एंड प्लस. ठीक है. तो वो फर्स्ट 5 जरूरत नहीं है. ठीक है. दे आर जस्ट टू शो यू कि इंटीग्रेशन इज एक्चुअली द एंटी डेरिवेटिव. हम फिफ्थ वाले से सिक्स्थ वाले से स्टार्ट करते हैं. इफ यू फील कि these are like easily done, तो आप भी जल्दी से स्क्रिबल करके फाइनल आंसर डाल सकते हो. एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो जैसे भी. तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, इंटीग्रल विल गो टू ईच 4 e raised to 3x dx plus integration 1 dx 1 dx. हाँ,
yes, प्लस x प्लस c. ठीक है. सेवेंथ, x squared so first thing I will do is I will multiply x squared inside. So I get x squared minus x squared into 1 upon x squared dx. Then I will take the integral to each. So this will be x cubed by 3 minus x plus c. Easy है. Integration ax squared plus bx plus c dx. फ्रेम में है. This is your I. A, B, C are constants here. So I will take the integral to each. डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, लेकिन इंटीग्रेशन में वैसा नहीं होता. आप a को बाहर निकाल दो. So this will be a is x cubed by 3, b x squared by 2. ठीक है. Now this will go to each. We'll do it quickly. 2 को बाहर निकाल दिया. x squared dx plus integration e raised to x dx. So 2x cubed by 3. ठीक है. 10th वाले से देखते हैं. आप खुद ही क्विकली कर लोगे. 10th says integration root x minus 1 over root x the whole square dx. A minus b the whole square. What is the formula? A squared minus 2ab plus b squared. Root x minus 1 upon root x the whole square is root x squared minus 2 root x plus 1 over root x squared. Square and square root cancel out. So x minus 2 plus 1 over x. So I can replace this by this. I becomes integration integral goes to each. Next x squared by 2. ऐसे था ना ये, इसको बाहर निकाल दो. So it will be 2x plus log of, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस तभी अच्छे से होगा जब हमको इंटीग्रेशन आएगा. नहीं तो आप पूरा रूल्स अप्लाई कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, बट इन द एंड व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेटिंग इट यू विल गेट स्टक. तो लेट अस डू इट फ्रॉम स्क्रैच. कोई ये नहीं है, वी हैव एम्पल टाइम. x cube plus 5x squared minus 4 over x squared dx. Again we will separate it. स्प्लिट कर देंगे. I is equal to ये, तो x cube over x squared dx
प्लस 5 को बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर्ड ओवर एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स माइनस 4। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है चलो नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे। तो ये हो गया इसमें से x प्लस 5 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस 4। तो दिस इज एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 प्लस 5x minus 1. This will solve, मतलब this will multiply and we'll get plus. See, आपने देखते देखते कितने सारे कर लिए। I'm not doing the 12th one, it is similar root वाला ही था वो भी। 13th वाला देखते हैं। x minus 1 over I. Look at this. I can take x squared out. X minus 1. Sorry. Okay. Now either I can split this. अगर split करते हो I strike this off. So this is integration x squared dx plus c. ठीक है। Now this is simple. See, 1 minus x into root x dx. तो पहले क्या करूं, रूट x को x रेज टू हाफ कर देता है। Then multiply this. So this will be x raised to half minus x into x raised to half dx. This into this. Okay. Yes. No, you can't. Because then we had integration by parts, but it is not required here. So now the integral goes to each. Half plus 1, half plus 1. So that makes it 3 by 2. You can leave it here, not necessary कि आप इसको ऊपर लेकर जाइए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं तो I'll leave a couple of questions for you to try. We'll move to question 18th. I is equal to integration sec x into sec x plus tan x dx. बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है तो you multiply it inside sec squared x dx sec x tan x dx. Integration of this is tan x
because derivative of sec x is sec x tan x and derivative of tan x is sec squared x. ठीक है, sec squared x over cosec squared x dx. So what should I do? One moment. इसके बाद ये खत्म होने आया, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे. So this is 1 by cos squared x. Sec x is 1 upon cos x. Cosec x is 1 upon sin x. ठीक है, what is this actually? ये देखो 1 by cos squared x divided by 1 by sin squared x. जब ऐसा कुछ होता है तो you multiply by the reciprocal. This will become sin squared x upon 1. That makes it tan squared x. So this part will become, now we don't have an integration formula for tan squared x, but trigonometric identity है ये. Tan squared x is sec squared x minus 1. So I will become integration sec squared x minus 1 dx. That means this is sec squared x dx. So this is tan x plus c. Okay. 20th question. अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्लिट कर दें. ठीक है, कुछ क्लिक नहीं हो रहा तो एक ये ऑप्शन हमेशा रहता है, 2 over cos squared x minus 3 sin x. Next I can take 2 out and here what I did is cos squared x को I split into this. Why? Because I will get sec x tan x. What is integration of sec squared x tan x? ठीक है, अब कुछ स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे. तो उसकी भी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है. These are state board, so I'll just evaluate. And ये एक्सरसाइज अगर आपको कभी रेफर करना होगा, I'll send the screenshot or this thing picture of this, you can use that. 3.1 का उसका सेकंड है ये. फर्स्ट वन इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन, तो इसके लिए. एंड उसका सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x ओवर cos x dx. मैंने आपको ट्रेगो बोला था ना फॉर्मूले प्रिपेयर करना, यहाँ पर वो सब यूज में आएगा. व्हाट इज साइन 2x? 2 sin x cos x. I will replace it here. 2 sin x cos x. 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 2 sin x cos x.
2 goes out, minus cos x plus c, that is minus 2 cos x प्लस सी. ठीक है. हाँ, अब ये हो गया तो sin x अपॉन cos squared x dx. साइन है, नीचे cos squared है, you break the cos into 2 and then I will split it 1 by cos x into sin x by cos x dx. That is sec x tan x. We converted into a form where we can integrate sec x plus c. This cos 2x over cos squared x into sin squared x dx. यहाँ पे can I, what is cos 2x? Uh, cos squared x minus sin squared x, half angle, half of this. Shall I replace it? Now shall I split this? So 1 by sin, that is cosec squared x sec squared x. Next, minus cot x minus tan x plus c. This question, sin x over 1 plus sin x dx. What happens here? Should I multiply ऊपर नीचे by 1 minus sin x? I is equal to then sin x minus sin squared x over 1 minus sin squared x sin x cos squared x. Now split. So what will this give us? Sec x tan x, that will become tan squared x dx. This will become sec squared x minus 1. Next,
right? When I take this, this will the negative, this will remain negative, but this part will become positive. Next, sec x minus tan x plus c. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का क्या करें? फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2x का cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर. आप क्रॉस चेक कर सकते हो. एक्सपैंडेड cos squared x plus sin squared x plus 2 cos x sin x. This is 1 plus 2 sin x cos x is sin 2, right? So replace कर दे. Square and square root cancel out. Next, now sin x minus cos x plus c. ठीक है. What will you do for a question like I is equal to integration of tan inverse of sin 2x upon 1 plus cos 2. पहले तो अंदर सॉल्व करेंगे. What is that? 2 sin x cos x over 2 cos squared x. So 2 and 1 of that gets cancelled. X squared by 2 plus c. वैसे ही if we get a question अप्लाई करें. So what happens here? Cos x by 2 minus sin the whole square cos x by 2 plus sin x by 2. ठीक है, you remember the formula. So square and square root cancel. हाँ, we divide because we want 1 here. ऐसे तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. tan inverse of
So if I divide ऊपर नीचे by cos, I get 1 minus tan x by 2, 1 plus tan right. What next? सी ये एक्चुअल डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर नहीं याद आता तो tan पाई बाय 4 क्योंकि ये है, आई कैन राइट दिस एज 1 इंटू tan x बाय 2 और ये जो 1 है इसकी जगह पे हम राइटिंग tan पाई बाय 4. नाउ व्हाट इज दिस एक्चुअली? tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b. So this becomes tan of a minus b. So in place of this, I can write I is equal to integration tan inverse of tan pi by 4 minus x by 2 dx. Tan inverse and tan cancel out. So you are left with pi by 4 minus x by 2 dx. Open कर दो. Half x dx. So pi by 4 being constant, we took it out. This is x squared by 4 plus c. ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन समझ रहे हैं. Now what if I give you a question as तो कौन सा फॉर्मूला? cos a minus b minus cos a plus b. What happens here? Cos a cos b plus sin a sin b minus cos a cos b. When you open this तो क्या हो जाएगा? प्लस वी डोंट वांट टू यहाँ पर, तो टू डिनोमिनेटर में चले जाएगा. सो कहना है write this I is equal to integration sin 8x into sin 4x dx. So that will become equal to cos 8x minus 4x minus cos 8x plus 4x upon 2 dx. ये पार्ट को हटा देता हूँ. Now half goes out, integration cos 4x dx minus half integration cos 12x dx sin 4x upon 4 minus half sin 12x upon 12 plus c. So that is sin 4x by 8 minus sin 24x by 12x by 24 plus c. ऐसा एक और है. क्वेश्चन 2 सेम एक्सरसाइज का I is equal to integration sin 3x cos 4x dx. यहाँ पे sin a cos b है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें?
if I use, I'm just asking, sin A plus B minus sin A minus B. So sin A cos B plus cos A sin B minus sin A cos B plus cos A sin B. That is 2 cos A sin B. So can I replace A by 4x and B by 3x? Right? So I becomes integration cos 4x into sin 3x dx. So accordingly what will happen is इसके जगह पे मतलब ये देखो ये ऐसे आ गया, ये 2 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ. अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो. हाफ और 2 मल्टीप्लाई कर दिया. 2 cos A sin B. So what is that? Sin of A plus B. 4x plus 3x minus sin of 4x minus 3x. So half, this is integration sin of 7x dx minus half integration sin x dx. So half minus cos 7x upon 7 minus half minus cos x plus 2. Finally, that is minus cos 7x by 14 plus cos x by 2 plus. No, what I did is, see, generally what in this case we wrote this and then we divided by 2. So I used another way because if sometimes looking at it it doesn't click, तो ऐसे कर सकते हैं. Hmm. What if we get a question that is where is that? Sin raised to 4x. It is the 10th question. इसको sin squared x squared dx. Now what is this? 1 minus cos 2x is 2 sin squared x. This 2 goes in the denominator. Now this will become 1/4, right? 1/4 and then expand it. So what will 1 minus 2 cos 2x plus cos squared 2x dx. These two can be integrated. I have a problem with this. What is the formula? देखो 1 plus cos 2 theta is 2 cos squared theta. जो भी ये एंगल है इसका डबल यहाँ पे. I have 2 cos squared 2x. So what should come here? Cos 4 ना बेटा, डबल कर देंगे ना. और फिर क्या करता हूँ इसको डिनोमिनेटर में. ठीक है. सो 1/4 आप बाहर ही रहने दो.
अब 1 प्लस हाफ दैट इज, ये देखो इसको स्प्लिट करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, ये cos 4x/2 हो जाएगा, तो दैट इज 3/2 -2 cos 2x प्लस cos 4x/2। ठीक है, इंटीग्रेट कर दें, 1/4 will remain out, तो 3/2 इंटीग्रेशन 1 dx -2 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos 4x dx। तो फिर I becomes 1/4 and 3/2 x minus 2 sin 2x upon 2 and sin 4x upon 4 plus c। राइट, आई कैन लीव इट हियर, 2 काट सकते हो, चाहिए तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो वी गेट 3/8x माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/8 प्लस c। हाँ, मैंने ये और ये हो जाएगा 4 2 8 एंड 32। बाकी के ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन है, आपको भी अच्छे से आ जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स dx। दोनों फॉर्मूले पता है, 1 माइनस कॉस एक्स विल बी 2 साइन स्क्वायर्ड एंड हाफ, 1 प्लस कॉस एक्स विल बी 2 कॉस स्क्वायर्ड x/2। दोनों को रिप्लेस कर दें, सो 2 साइन स्क्वायर्ड x/2 2 cos squared x/2 dx, 2 cancelled, minus integration 1 dx, so tan x/2 and then you have a half। ठीक है, इस x का कोएफिशिएंट से डिवाइड किया प्लस c। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस टू द 14th क्वेश्चन, देखो cos x minus sin x over 1 plus sin 2x dx। ये इसमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आ जाएगा इसमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा या यहाँ पर हम लोगों को वो यूज करना पड़ेगा न्यू। हाँ, एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा cos x minus sin x and this will become cos x plus, then we will have to make a substitution, this is equal to t and then proceed। तो with for the moment at present we are not doing substitution, तो इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जो जो सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड है वो नेक्स्ट इसमें ये करेंगे, पहले बेसिक वाले रेडी करते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड का, I is equal to integration sin cube x minus cos cube x divided by
sin squared x cos squared x dx. हाँ, अभी सबसे पहले टेम्पटेशन क्या आता है पता है सबको? वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने का, बट क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे. अब एक कैंसिल हो जाएगा तो साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर्ड एक्स ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम. नेक्स्ट स्प्लिट कर देंगे तो sec x tan x 1 by cos x into sin x by cos x dx. Next sec x tan x dx cosec x cot x dx. So derivative of sec x है ये minus of minus cosec x plus c, right? So sec x plus cosec x plus c gives us the answer. There is one particular category of questions which I wanted to show. Suppose they give me a question like integration 2x plus 3 divided by 5x minus 1 dx. Now here what should I do? इसमें दोनों की डिग्री सेम है. आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, बट पार्शियल फ्रैक्शंस में भी रूल होता है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, है ना. सो व्हाट शुड वी डू हियर? डिवाइड, परफॉर्म डिवीजन एल्गोरिथम, right? So I want 2x, I have 5x. I will multiply by 5x into 2 by 5 gives me 2x. Minus 1 into 2 by 5 gives me minus 2 upon 5. I am subtracting, so I will, this is plus, right? ये actually plus था. So when I subtract, the signs will change. So 3 plus 2 by 5, what is that? 17 by 5. So I can express the numerator as 2 upon 5. क्या है डिविजन एल्गोरिथम? क्या है डिविडेंड? देखो ऐसे, डिविडेंड is divisor into quotient plus remainder. तो ये हो गया 2x plus 3. डिवाइजर क्या है 5x minus 1. क्वोशिएंट क्या है 2 upon 5 and remainder is 17 upon 5. So I will replace it. So I becomes which is now split.
तो कैंसिल कर दे 1 dx, राइट। यहाँ पर सो 2/5x, what is this, log of 5x minus 1, but 5 is the coefficient. Then you multiply it, it will become 17/25. ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चंस देखने थे। वन e raised to 4 log x minus e raised to 5 log x। नहीं, वो रूल याद है, b, so this log, first of all this goes at the top, right? Now x raised to 4 will come down. Similarly for that, x raised to 5, next अभी स्प्लिट कर दो, राइट। 1/x dx, so that is log of mod of x, ठीक है। ये देखो, कुछ क्लिक नहीं होता, x minus 1 है, so I will add and subtract, है ना। कुछ क्लिक नहीं होता तो एटलीस्ट मैं, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा, स्प्लिट करेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब, कुछ तो ऐसा कर सके। अब इसको सेपरेट कर दूं, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आई विल रिप्लेस x क्यूब माइनस 1 क्यूब, that is x minus 1 into x squared plus x into 1, that is x, plus 1 squared, that is 1. So I becomes integration x minus 1 into x squared plus x plus 1, ऐसे इसको x dx, so this is x cubed by 3 plus x squared by 2 plus x log of mod of x minus 1 plus c, ठीक है।
तो मोस्टली जो हमने फर्स्ट टाइप के जो बेसिक्स जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं. नाउ सम ऑफ द रिमेनिंग you can try. Next lecture में we will go to substitution method and then उसके basis पे we will solve more questions. ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर करता हूँ और स्टेट बोर्ड के भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे एंड मोर ऑन ट्रिगो फ्रॉम दी आईएससी बुक. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर विल फर्स्ट गो टू सब्स्टिट्यूशन but in the class we'll solve more questions. I'll scan and send the pictures.